rush. I have to rush. Actually मेरी ट्रेन 8 बजे की है and it's कितना हो रहा है 7:39. Just 21 minutes है मुझे. अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की है. I'll just have Rapido or anything whatever I get. Hi guys, welcome back to another vlog. मैं हूँ अपने होम टाउन सिद्धार्थ नगर के रेलवे स्टेशन पे. I'm just waiting for my train to Gorakhpur. And like अभी यहाँ पे ट्रेन है जो कि इट्स गोमती एक्सप्रेस गाइस. धीरे धीरे निकल रही है ट्रेन लखनऊ के लिए. काफ़ी खाली है यार. एक्चुअली आज छुट्टी है ना, कल से ट्रेन पूरी भरी रहेंगी. अभी पहुंच गया हूँ उसका बाज़ार. ये सिद्धार्थ नगर में आता है. एक स्टेशन सिद्धार्थ नगर का, एक स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन है. ये कोई ट्रेन खड़ी है. आई डोंट नो व्हिच ट्रेन इज दिस. आई लव दिस स्लो पेस्ड, increasing, accelerating. I don't know why. Just got the notification for my train to Delhi, which is from Gorakhpur. Actually, it was a REC which I booked. Then it got confirmed, but chart prepare होता है तभी seat number होता है. So I just got it. 3 hours, 4 hours left है अभी. थोड़ी भी डिले होती है ना, so I may miss my train. ज़्यादा डिले नॉर्मल टाइम में बट आई हैव अल्टरनेटिव फॉर दैट. उसका ब्रिज इज अ रिवर गाइस, स्मॉल रिवर. दिस इज सिद्धार्थ नगर ओनली. सो आई थिंक नाउ फ्रॉम हियर दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. After like 5-10 kilometers it is going to be a new district which is Maharajganj. नकहा जंगल एक स्टेशन पहले पड़ता है गोरखपुर से. एंड देर आर चांसेस कि कभी भी ट्रेन यहाँ पर रुक जाती है. मेरे पास 2 घंटा है. मैं थोड़ा सा गोरखपुर थोड़ा सा घूमना भी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले ही निकल लूँ यहाँ से ऑटो वगैरह करके गोलघर. एंड देन वहीं से स्टेशन पास है, घूमते फिरते पैदल निकल लेंगे वहीं से. चलो, देर आर चांसेस कि बीच में भी जाकर रुक जाती है. Just came back again. Actually, I like the auto wala was saying that there might be certain traffic and all due to the Shera. So I thought like I might miss my train if I got stuck in the traffic. So I just came back and took the train, and now it's like started moving. It's just one station, right? Just 5 kilometers. Hopefully it doesn't stop in between. Otherwise it will be totally problem for me. It was just 2.5 kilometers away from the Gorakhpur railway station, and this train was stuck there. जा ही नहीं रही थी. क्या 1 घंटा और बचा पर यार मेरी ट्रेन है. एंड आई थॉट लाइक थोड़ा घूमूंगा यार, थोड़ा मुझे एक्सप्लोर करना था गोलघर वगैरह. एंड सीन्स डिफिकल्ट अगर और डिले होगा. Should not stop. Just 1 kilometer. Just 1 kilometer away from the station. Almost reached guys.
वी आर वेरी क्लोज टू गोरखपुर रेलवे स्टेशन एंड थोड़ी गोरखपुर की वाइब आने लगी है. थोड़ी थोड़ी गोरखपुर की सिटी की वाइब आने लगी है. फाइनली रीच्ड गोरखपुर स्टेशन. जल्दी जल्दी उतरता हूँ. लेट्स सी इफ आई विल विजिट गोलघर और नॉट. प्लेटफॉर्म नंबर ये 1 यही है. यहीं से ट्रेन मिलेगी मेरे को. प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमसफ़र अभी लगी नहीं है. 8 बजे की ट्रेन है. तब मैं गेड़ी मार के आता हूँ. Guys, just came out from the railway station. That is the railway station, and took e-rickshaw. And now I'm going towards Golghar. Like I have read, like Gorakhpur is like one of the world's second largest or the first largest station. I have to check. I'll correct, like I'll just correct it from Google, or you can correct in the comments. Came out here to just refresh. Guys, now I am in Gorakhpur and at a restaurant. Actually मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, इसलिए मैं आ गया, so that I can charge my phone as well and get some refreshment. So I just ordered this watermelon. Just ordered this because मुझे काफ़ी प्यास लगी थी and I love watermelon. यहाँ पे फ़ोन चार्ज में लगा रखा है because अगर फ़ोन में चार्ज नहीं रहेगा तो मैं अपनी टिकट कैसे शो करूँगा if someone asks. I have to rush. Actually मेरी ट्रेन 8 बजे की है and it's कितना हो रहा है 7:39. Just 21 minutes है. मुझे अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की है. I'll just have rapid or anything whatever I get. I have to rush. फ़ोन में थोड़ा चार्ज होता है बस, इसीलिए मैं आ रहा हूँ. Guys, this e-rickshaw wala just got to know that I am in trouble and I'll miss my train. So he just asked me extra, just like 1 किलोमीटर का 100 रुपये. मैं बोला ठीक है भाई ले ले, क्या कर सकते हैं. यहाँ से 1 ही किलोमीटर, just 1 किलोमीटर. This is गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा पता नहीं क्या लिखा था. This is the bus station, like that is close to, like all buses are lined up here. थोड़ा जल्दी ले लेना भैया, तेज. It's just 16 minutes and 8 बजे मेरी ट्रेन शू. ना कर जाऊं. डोंट थिंक आई विल मिस. थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है खुद से कि अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 कहाँ से आसानी से मिल जाएगा. व्हाट आई एम डूइंग, व्यूज़ के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ. मेरी ट्रेन एकदम नोक पे है, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जाना है. आई थिंक इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई ये गोरखपुर का. ढूंढते ढूंढते मर जाऊँगा मैं.
गाइस दिस इज सच अ ह्यूज, वहाँ से देखो, वहाँ से, एंड दिस नेवर एंडिंग यार। मतलब आँख की नज़र के बीच में बहुत सारे अड़चन आ जा रहे हैं, देख ही नहीं पाओगे। सिक्योरिटी से आ गया बाहर। आई जस्ट हैव टू चेक। यहाँ पे इतना लंबा रेलवे स्टेशन है ना कि मतलब 2-2, 3-3 ट्रेनें लग जाती हैं आगे पीछे। तो आई हैव टू चेक वेयर इज माई ट्रेन टू क्रॉस दैट फुट ओवर ब्रिज। ये कौन सी ट्रेन लगी हुई है सिवान जंक्शन के लिए? अभी भी मेरे पास 13 मिनट है। पैनिक फालतू में कर रहा हूँ यार मैं शायद। यहाँ पे देख लेता हूँ। आनंद विहार हमसफर इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 9। क्या सही नाम है ना, हमसफर। चलो जल्दी चलते हैं, 11 मिनट और बाकी हैं। आई लव दिस ट्रेन यार, आई लव ट्रैवलिंग विद दिस ट्रेन। द टाइमिंग लाइक बहुत ही सही है। मतलब रात के 8 बजे चलो और सुबह के 8 बजे दिल्ली पहुँच जाओ। आई एम एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। अमृतसर सहरसा। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड कैन इमेजिन सी हाउ बिग दिस रेलवे स्टेशन इज। दैट इज़ द ट्रेन गाइस। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा बट आई हैव सीन। अलग ही कलर है हमसफर का, ग्रीनिश डिज़ाइन, प्रिंटेड डिज़ाइन है। दिस इज़ द ट्रेन गाइस विच आई विल बी बोर्डिंग। हमसफर सुपर फास्ट एक्सप्रेस गोरखपुर टू आनंद विहार। I have to find my coach. B20 है भाई, मेरे को B4 ढूंढना है। I have to check watch। मेरे को कंफर्म नहीं है B4 या B5 है। I have to check। Just let me check guys। अभी मेरे पास है 8 मिनट एंड मुझे जाना है B4 में। अभी मैं B16 के पास से गुजर रहा हूँ। What the hell यार, I have to travel, like I have to walk a lot. This is the color I like and the name as well, Humsafar. Very good name. Just my one handbag and this झोला। इसमें मेरा घर का खाना है, मेरा फेवरेट घर का खाना है। B6 के पास पहुंचा हूँ। एक डब्बा और क्रॉस करना है मेरे को। देन आई विल गेट माय। वैसे अंदर से भी जा सकता था बट अंदर से और टाइम लगता क्योंकि लोग अंदर अपना भी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। आई थिंक B4 है ना मेरा। यार एक बार चेक कर लेता हूँ। यस गाइस इट्स B4। आई थिंक फाइनली आई हैव रीच्ड finally I got it. Good. I'll just remove these curtains to just see. So I think it's 8 and the train is about to leave. Started moving and now let's see you in Delhi. Having this. Can you guess? Someone guess in the comments what's finally reached just I think 1 or 2 kilometers to the station. Just reached
Guys, now I'll just take this metro and थोड़ा लंबा है यार. तो अभी दिल्ली में ही हूँ, फिर दिल्ली से नोएडा जाएगी, नोएडा से फिर श्रीनगर फिर दिल्ली. मतलब है ही ऐसा, समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाना भी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा. रेलवे स्टेशन एंड द मेट्रो स्टेशन आर वेरी क्लोज. ये बहुत सही है. And that's it guys, ending this vlog here. See you in next vlog or podcast, whatever will be coming.